Teamwork is an important part of human resource development and for any organization to thrive. It is important that their employees learn to work in a collaborative environment. A growing concern among many professional organizations is to teach their team the importance of teamwork. Outdoor experiential learning programs enable individuals to learn to work together in a collaborative environment, increase empathy and bonding among fellow workers, and improve collective strategizing. Trek the Himalayas has designed an outdoor experiential learning program for corporate employees. We believe that the outdoors is a great learning space and time, and again, we have seen people transform completely in an outdoor environment. The action oriented nature of the program allows a deeper introspection and understanding of different values. Hands on experiences are always a great way to inculcate virtues in an individual. The activities they engage in are carefully curated by the outdoor experts at Trek the Himalayas and help bring about a positive shift in the mindset of the employees. Let us take a look at what an outdoor experiential learning program looks like. Recently, we had a team from the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development join us for a corporate outdoor program, and here are some glimpses from the event. I'm head of operations and I'm working with Trek the Himalayas. I belong to this place only from Uttarakhand. And welcome to Uttarakhand for your BPAT training and leadership program. Thank you. 6-day-long program took place in and around the yoga capital of the world, Rishikesh. Day 1 started with morning yoga. In the corporate world, employees and executives all live busy and hurried lives, with little time to spare for wellness and self-care. Yoga helps lower work-related stress and helps improve the creative thinking process of your team. पूरे ग्रुप का ये ज्ञानवर्धन कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे तन मन बहुत ही शांत, प्रसन्न और ऊर्जा प्रदान करती है, पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इससे हमारा मन और जो है एकदम कंसंट्रेट करती है और सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हमारे गुरु जी भी बहुत ही अच्छे से योगा हम लोग करा रहे हैं समय पे। बहुत ही हम लोग खुश हैं और इसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और प्रतिदिन इसको करके आने वाले समय में ये योगा जो है हम लोग पालन योगा जो है हम लोगों के जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाएगा, हमारे विभाग की ओर बहुत परिवर्तन लाएगा और बहुत ही ऊर्जाबद्ध तरीके से हम लोग सभी जितने भी सहभागी हैं बहुत ही मन से हम लोग कर रहे हैं और निश्चित ही ये जो है पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को ये योगा जो है एक सूत्र में बांधेगा। धन्यवाद। ये एक 5 डेज आउटडोर लीडरशिप वर्कशॉप है जो कि हमने बीपार्ट टीम के डॉक्टर्स इस बैच में आए हुए हैं। करीबन अराउंड 75 प्लस डॉक्टर्स हैं। बैच काफ़ी एनर्जेटिक है, डिफरेंट लेवल के लोग हैं
और अभी इनकी क्लासरूम ट्रेनिंग हुई थी अपने इंस्टीट्यूट से, उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये पूरी टीम यहाँ पर आई थी। टीम काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी ओपन माइंडेड है, कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे से टीम वर्क में किस तरह से काम करना है काफ़ी है, और इनिशिएटिव भी काफ़ी लेते हैं इनके जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं हर चीज़ को करने में। एंड पॉजिटिव एक लर्निंग लेकर जा रहे हैं यहाँ से, तो उसे डिपार्ट को एक अलग लेवल पे लेकर जाएंगे और इंडिविजुअल पार्ट में भी एज अ गुड लीडरशिप क्वालिटी स्प्रेड आउट करेंगे सो दैट इनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। सो आई वुड डेफिनेटली से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द डिपार्ट टीम मेंबर्स। Day 2 was a fun day filled with lots of games and activities, all oriented towards team building and instilling the importance of cooperation. ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते, हमारी कोई भी टीम भूल नहीं सकती है। हमारे लिए हम इसमें हमें लर्निंग प्लस एंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट सब कुछ मतलब बैलेंस्ड है, और सब कुछ इतने बैलेंस वे में सब कुछ सही जा रहा है। और अभी भी 2-3 दिन बाकी है और हम और भी एक्साइटेड है, क्योंकि अभी में ट्रैकिंग करना है, राफ्टिंग करना है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हमें, हमारे पूरे टीम को। Day 3 was spent in rafting and paintball games to inculcate a little light-hearted spirit. It is equally important to take time out to play. बिहार सरकार की वजह से मैं बीपार्ट गया में ट्रेनिंग लिया, जहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी वाले लोगों से मुलाकात हुई, और उन्होंने संगीता रेड्डी मैम और बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुआ। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत मैं ऋषिकेश आया, यहाँ ट्रैक द हिमालयस की टीम से मिला, और इन टीम से मिल के पता चला कि मतलब ट्रैक द हिमालयस क्या है, और बहुत ही इनका सब कुछ व्यवस्थित था, प्लान वर्क था, इनके टीम मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे थे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मैं आया था, तो लीडरशिप की गुण सीखा। यहाँ सर लोगों ने टीम का मीनिंग बताया कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सबसे पहले मैं सोचता था कि अकेले ही सारा चीज़ किया जा सकता है, लेकिन जब यहाँ पे आया तो लगा कि नहीं, टीम की ज़रूरत होती है, और इस चीज़ को सीखने के बाद मैं अब वहाँ जाके अपने जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे इस चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा। राफ्टिंग भी मैंने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पे सीखा कि टीम वर्क क्या होता है। आप अकेले सोचते हो कि बहुत कुछ कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता। Day 4 involved a hiking trip to Nilkant Mahadev Temple. Trekking is a practice that naturally makes you more resilient and invokes empathy among the team as they motivate each other. यहाँ की जो टीम है वो बहुत मस्त है, मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, प्लस फ्रेंडली हैं, मतलब हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग गए थे नीलकंठ ट्रैकिंग में, वो भी बहुत मस्त था, अच्छा फीलिंग था। सारे मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे, सब बीच में सब सपोर्ट कर रहे थे, सबको हेल्प कर रहे थे, रेस्ट दे रहे थे। The day ended beautifully with a serene Ganga Aarti. Day 5, the last day, was spent sightseeing in and around. First, we headed to Teri Dam, the tallest dam in India and the 12th tallest dam in the world, and Teri Lake, one of the largest man-made lakes in India. The journey followed on to the holy confluence, Dev-Prayag, where Bhagirathi and Alaknanda meet to form Ganga, and finally return back to Rishikesh. हमारे बिहार वेटनरी सर्विस का ग्रुप भारत दर्शन के लिए उत्तराखंड ऋषिकेश में आए हुए थे, जिसमें ट्रैक द हिमालयस के संदीप रावत जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था किया। सारा व्यवस्था ट्रैक द हिमालयस का बहुत अच्छा था, फूड एकोमोडेशन बहुत अच्छा था। संदीप रावत जी के सारे टीम मेंबर बहुत अच्छे, बहुत ही कोऑपरेट किए, और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ संदीप रावत जी को, जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया। डीजी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे और वो बिहार वेटनरी सर्विस के पूरी टीम को इतना अच्छा मौका दिया घूमने का। थैंक यू सो मच। The
corporate experiential learning program is specially designed to bring out the collaborative instinct and allow the team to invest time in building cordial relationships with their teammates. Trek the Himalayas welcomes you to join us with your team as well and reap the benefits of the outdoors.